Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Anjuna police have registered a murder case and added section 302 of IPC in Sonali Phogat's death. The murder charges have been filed against her manager Sudhir Sangwan and friend Sukhwinder. Also, the post-mortem of Phogat was completed on Thursday afternoon. The post-mortem report suggests there are multiple blunt force injuries on her body. The cause of death, however, has not been disclosed since the chemical analysis and other reports are pending. The body of Sonali Phogat was taken to Daboli Airport to be taken to her native place, Hisar in Haryana, Thursday evening. Sonali Phogat's brother, Rinku Daka, said, "My sister was fit and healthy. She cannot die of a heart attack. The color of her face and body have turned blue, which indicates poisoning." Meanwhile, Phogat's mother has called on the Goa government and former governor Satyapal Malik for help. हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी और आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी। और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है तो यहाँ एमएलए और सांसद की तो छोड़िए, कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं है। लेटर में भी आप एक मेंशन किया था कि रेप का मामला है, क्या है ये कुछ समझ जाना? ये सोनाली जी ने हमें उसी रात, जिस रात मर्डर हुआ है उससे पहले हमें बताया फ़ोन पे। मेरी माता जी से बात हुई, 2 बहनें उनसे बातचीत हुई और मेरे जीजा जी से, मेरे जीजा जी साथ में बैठे थे शिफ्ट के, तो बातचीत हो रही तो वो घबराई हुई थी। तो उन्होंने जो पुरानी बातें हैं वो भी हमें बताई कि किस कारण मैं इतने दबाव में हूँ और क्यों डिप्रेशन में हूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस दौरान बताई, उसके बाद मुझे पता चला। पहले ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं थी। अगर ऐसे पहले हमें कोई इस चीज़ का आभास भी होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। फिर आपको क्या लगता है रेप का भी घटना ऐसा रहेगा, ऐसा लग रहा है? ये तो देखो मेडिकल में पुष्टि हो जाएगी। फिर आपका क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड है गवर्नमेंट को? और इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड तो यही है जी, अगर इंसाफ मिले, सब कुछ फेयर हो तो यहाँ तो, लेकिन ऐसा कुछ लगता है नहीं कि यहाँ फेयर होगा। फिर आपको हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। इधर पोस्टमार्टम किया तो आप सेटिस्फाइड नहीं रह रहे? नहीं, आगे हम रीपोस्टमार्टम कराएंगे। सर पुलिस का आपको सपोर्ट नहीं हुई? पुलिस का सपोर्ट कहाँ है? पुलिस का सपोर्ट होता तो हमारी एफआईआर दर्ज होती। एक छोटा सा केस होता है, लड़ाई झगड़े का केस होता है, उसमें पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अदर स्टेट है, आपका स्टेट नहीं है। जैसे हम यहाँ हमारे रूल हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी एफआईआर होगी, उसी बेस पे सीएम ने कल ओपिनियन देंगे कि क्या है, क्या मैटर है, किस कारण इनकी डेथ हुई है, उस बेस पे एफआईआर दर्ज। और कल एक सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो नेचुरल डेथ है और अटैक से मीन्स उनकी मौत हुई है करके। अगर वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि केस चलेगा तो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चलेगा, तो वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपने आप अपने बेस पे किस तरह कह सकते हैं कि ये नेचुरल डेथ है? उनको कैसे पता चल गया कि पोस्टमार्टम से पहले उनको कैसे पता चल गया कि एक नेचुरल डेथ है? और नेचुरल डेथ कैसे है? Clinton D'Souza for Herald TV. The entire span of the new Zuari bridge could be open for motorists between Verna and Bamboli by November, Diogonda Patel, Deputy Project Manager Dilip Bilkon Limited, disclosed to media on Thursday. The second last segment is being hoisted Thursday and the closure segment will be added on 30th August, which will join both ends of the bridge. It will take another 2 months for crash barrier and load testing, and then bridge will be thrown open to traffic, including heavy vehicles, he said. The 14-kilometer Bamboli-Verna stretch will be thrown open to vehicles by November 2022. The Zuari bridge has a Chinese consultant and a French designer. The closure segment of Zuari bridge will be added on 30th August, which will join both ends of the bridge. केबल स्टे मेन पार्ट का, जो कि अभी हम सेकंड लास्ट सेगमेंट आज लिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन हो रहा है। एंड सेकंड जो क्लोजर सेगमेंट है, जो कि हम इस मंथ एंड ऑफ 30th को हमारा प्लान है
कि हम क्लोजर सेगमेंट उठा लें, तो उससे ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो माइनर वर्क्स है, क्रैश बैरियर एंड रेलिंग्स और बाकी जो बीसी वर्क है, अदर पोस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना है, ये इसके लिए हमको और मोर 2 मंथ और लगेंगे। तो समवेयर बाय नवंबर, सो टिल नवंबर इट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक। ये नवंबर तक पूरा ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा, बाम्बोलिम से वेरना तक। यस, ये बाम्बोलिम से लेके वेरना तक टोटल 14 किलोमीटर का स्ट्रेच। और ऑलरेडी हमने पैकेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर पैकेज 3 भी कंप्लीट है। ओनली दिस पोर्शन अगर जॉइंट हो जाएगा केबल एक पार्ट का, सो 14 किलोमीटर ओपन फॉर ट्रैफिक। चाइनीज़ कंसल्टेंट अभी भी है कि आप देख रहे हैं जो केबल्स है, जो केबल्स प्रोवाइड किया है हमको पूरा चाइनीज़ ने। एज अ इंडियन पार्टनर है स्पॉन एंड चाइनीज़ पार्टनर है ओवियम। तो ये दोनों हमारा जो केबल स्टेसिंग करने का काम जो है ये दोनों मिलके कर रहे हैं। उसमें चाइनीज़ कंसल्टेंट आके उसका जो एक्सपीरियंस है हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंच डिज़ाइनर एज इट इज़ है, जो कंसल्टेंट है, जो कि हमने पहले हम चाइनीज़ को अपॉइंट किया था कि वो आके यहाँ पे उसका मॉनिटरिंग करेंगे। बट ड्यू टू कोविड एंड उसके बाद में तो अभी TPF उसमें काम कर रहे हैं कि जो हमको डिज़ाइन के बारे में और प्रोसेस मॉनिटरिंग वो सब TPF कर रहा है, चल रहा है। ये है 14 नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, टोटल आउट ऑफ 53 सेगमेंट्स। Story by Kiran Borkar for Herald TV. A small group of priests are traveling to the capital of Christendom, Rome, to witness the elevation of Archbishop of Goa and Daman, Philip Neri Ferrão, as cardinal on Saturday evening. It is after 465 years that Goa will get its first cardinal. Philip Neri Ferrão is the 6th person of Goan origin to become a cardinal. The church in Goa will celebrate Saturday evening when Philip Neri Ferrão will be elevated as cardinal. The 69-year-old prelate has already travelled to Rome with his secretary, Father Loyola Pereira. The village of Aldana, from where Ferrão hails, too will be rejoicing. Archbishop of Hyderabad, Anthony Pula, was also among the 20 prelates who will be made cardinals in Rome this Saturday. Ferrão's entourage included 3 episcopal vicars of the archdiocese, parish priests, chaplains and some former colleagues. After the elevation of Saint Joseph Vaz as saint, this is another big moment for the Goa Church. Monseñor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão, Arcivescovo de Goa e Dalmau, India. Bureau Report for Herald TV. Sand mining is going on in full swing with suspected nexus of police and Mamladar at Ugwe. Locals of Ugwe, Tirakol, have alleged. If not, why are there sand boats in the river? They're illegally extracting sand at will, activists pointed out. Police patrolling is absent and it is people who are waging a war and creating bad blood in the village. They are facing destruction of their fields. Who will compensate them? People ask. Listen to this story of illegal sand mining in Ugwe. Sand mining is going on in full swing with suspected nexus of police and Mamladar in Ugwe. Sand boats are openly anchored in the river. People are waging a war and creating bad blood in the village, activists said. The width of the river has increased from 10 meters to 250 meters. The High Court of Bombay at Goa has directed state authorities to look into the statements by Goa River Sand Protectors Network that illegal sand mining was taking place in new locations. So Herald and Herald TV went to explore if illegal sand mining is really taking place in Ugwe. आज पळय हे जे तेंच्यांनी सांगलेले आहा पण ते हे पोलीस किंवा हे फॉलो करिना अशें आमकां अजून दिसता. कित्याक लागून पळय तांकां होडये जे भायर काडपाक सांगलेले होडये अजूनय न्हयत कित्याक लागून. दुसरें म्हटल्यार काल पयरूच हांवें पेपरार आमी आवड केल्ले की बाबा तेंच्यांनी बंद केले म्हणून. ते लोकांनी वाचल्या उपरांत म्हाका कितलेशे जाणांनी सांगले की बाबा अजून बंद जावंक ना. आयज आमचे उगव्या ते सायडीक पासून सकाळचे व्हडये ते नुस्तेकारांक बी मेळटात की रेंव घेवन वयतात ते. मग हे कित्या खातीर तेका लागून जे पुलीस बंदोबस्त दवरपाक जाय आशिल्लो तो बंदोबस्त अजून तेंचेर जाल्लो ना. तेका लागून तांकां भंय जाल्लो ना तेंच्या जिवाक. ते जाय तशे रेंव उसपान व्हरतात.
आणि हे ॲक्च्युली अशें जावपाक जायना. कारण कशें हायकोर्टाक पोलीस फॉलो करिना किंवा मामलेदार हे जर फॉलो करिना रूल जाल्यार आमच्या सारके बारीक लोकांक कशें आयकतले ते. आमी बेश्टे झगडून मरता तेंच्या कडेन आनी भितरल्या भितर आमच्या गांवांनी झगडी जाल्ली आसा. तेका लागून हेचेर हायकोर्टान आनी स्ट्रिक्टली तेचेर कारवाई करपाक जाय अशें आमकां दिसता. कारण तेचेर जर तेंच्यांनी सांगलेलें की CCTV कॅमेरे घालतले आनी कितें घालतले, पूण CCTV कॅमेरे जेन्ना घालतले तेन्ना टायम आहा तसर आमचे ते कबरय जाले जमनी वचून. आयज जमनी हे गेले तेचेरय लोकांनी कितें केलें किंवा मामलेदारान आमकां कितें दिल्या तेचेर लोकल जे ऑथॉरिटी आहा लायक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार पुलीस हेजे कितें एक्शन आहा तेंच्यांनी फक्त आतां तेचेर तितल्या पुरती एक्शन घेतलेल्या भशेन दिसता. कित्याक सांग पळय अजूनय ते मदीं चालू आहा जाल्यार पोस्टलाचे बी ते कित्याक हें करिना थंय होडे घालना तेंचेर होडये ना म्हणटात आनी कितें ना जाल्यार ते आमी कबरच जातले न्हू. मागीर ते पोस्टलाचे पुलीस थंय दवरले कित्याक ते बंद तरी करा न्हू ऑफिसां. हे आमकां त्रास न्हू विनाकारण. आमकां तांकां फोन मारा ते मागीर म्हणटा हांगा लागलो हे लागलो फोन ते खंय शिवले लागता. मागीर आमकां पोस्टलाचे खंय दवरल्यात आनी खंय बंदोबस्त आहा. हे जर होडये अजूनय चालू आसा जाल्यार बंदोबस्त खंय उरला तुमचो. Clinton D'Souza and Asmita Polji for Herald TV. The staging of Tiatr will begin at the Tiatrist Hall, Ravindra Bhavan from 30th August. The decision was arrived at after a meeting of officials with Tiatrist on Thursday. The hall was suddenly closed, citing repairs of 2 broken air conditioners as the reason. Tiatrists have said they don't mind staging the concrete dramas even without air conditioning. The staging of Tiatr will begin at the Tiatrist Hall, Ravindra Bhavan from 30th August. The hall was suddenly closed, citing repair of 2 broken air conditioners as the reason. Tiatrists will stage concrete dramas without air conditioning. आज आमकां एक्चुअली मिटींग आपयली बाय मेंबर सेक्रेटरी अग्नेल की रवींद्र भवन हें बंद केलां ताजेर एक उपाय काडपाक आनी ताणें उपाय काडला तो म्हणजे कितें आहा 3 प्लांट पडे AC आहा ते 2 हें जाल्यार पूण एक चालू आहा. आतां तो घेवन आमी पळय रेस्पॉन्साचे 2 शो पासून केल्या कोणाक कांय प्रॉब्लेम जावंक ना. आनीक सो तो तें घेवन आमी सुरू करता आनी कितें वर्स्ट टू वर्स्ट कितें येयलें जाल्यार सायडीन व्हडले फॅन बॅन आमी अरेंज करूंक सोदतात. पूण आमी मागता लोकांक कॉपरेशन कित्याक लोकांक तियात्र सांबाळला लोकूच सांबाळतलो ह्या फुडाराक. 20th आमचो शो आसलो 7:30 आनी डेफिनेटली आमकां हांव उलयलो मिनिस्टर लागीं आनी ताणें म्हाका सांगलें आमी सगळें तुमचें चिंततात आनी बूक ऑर्डर दिले उपरांत बूक केन्ना स्टार्ट जाता त्या प्रमाणे आपण हॉल बूक करतले आपल्याक 15 दीस फ्री आयले. सडनली एक ऑर्डर काडली की हॉल बंद म्हणून 24th. सो आतां तो MS आमकां मेवला आनी तेणें आमच्यो तियात्र म्हाका जायते चिंतला आनी तेणें पोत्तून हॉल स्टार्ट करपाक येला ते 2 तेजे आहा तेजे स्टार्ट करतलो तो. आनीक कितें डिफिकल्टी जाल्यार जालें जाल्यार मुखार तेन्ना जेन्ना वचलें तें कामाचें बूक ऑर्डर तेन्ना काम स्टार्ट जाता तेन्ना सावन ते थोडे दीस बंद आसतले. पूण आतां सद्याक तियात्र स्टार्ट आसतलो आनी मुगे आतां 28th आसलो तो मातशें पोस्टपोन करचो म्हाका ते मुगे आर्टिस्ट आसलो ते दुसरे कडेन तियात्र येयले. तियात्र बी आसा लोकांक इनकन्विनियन्स जायत म्हूण आमी ते कॅन्सल करपाक लायले. सो आयज आमी सगळे आमगे तियात्र डायरेक्टर्स तांकां आपय कन्सर्न आहा तांकां आपय एक मिटींग येयली आनी नॉन AC कशे भाशेन चलोवपाक शकताय वेदर दे आर विलींग टू कंडक्ट देर तियात्र नॉन AC लेट अस सी नॉन AC उलयची न्हू जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना म्हण आनी आमचे डायरेक्टर आहा ते एग्री जाले नॉन AC थोडे प्रोग्राम चालू तियात्र चालू दवरपाक. पण एक ACचेर कितें चालू एक AC आहा ती चालू आसतलीच. सडनली सपोज तेजे जो लोड बी येवन तो कितें जायत जाल्या पासून इट शूड बी स्टँड बाय ते म्हणजे नॉन AC रेडी चालू करपाक. दॅट इज अ डिसिजन. आमी तुका AC म्हणून गॅरंटी दिनाय कित्याक आतां 3 चलताल्यो 2 चलताल्यो तितून मध्ये आतां सो एकूच चलतली. आतां एक आहा तेजे कडेन ओवरलोड जावन कडेन ती स्टॉप जावपाक शकता पॉसिबिलिटीज देर. ही सगळं प्रिकॉशन घेवन तो तियात्रीस तो चालू करपाक शकताय म्हणजे सायडीन फॅन घालून कितें तरी करून जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना. Aditya Bidre for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant with other experts will address primary school in a virtual conference on September 19th from 10 a.m. to 12 p.m.
The Chief Minister will provide information to students, teachers and parents on the new education policy and the Mulya Vardhan project. Sawant also informed that Goa is the first state to carry out Mulya Vardhan in primary schools. Sawant clarified that the government will not shut schools but instead merge them. Chief Minister Pramod Sawant will hold a virtual conference to discuss the new education policy and the Mulya Vardhan project on September 19. Sawant also informed that Goa is the first state to carry out the Mulya Vardhan project in primary schools. Sawant clarified that the government will not shut schools but instead merge them. Mulya Vardhan will also be implemented in class 5 and 8. Mulya Vardhan 3.0 will be implemented as a platform integrated with the state curriculum. And Mulya Vardhan 3.0 in Goa will be studied and evaluated as a capstone project by students and faculty at Evans School, University of Washington. Virtually I am addressing to all the primary school in the state of Goa. म्हणजे आम्ही हांगा पणजे हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान सगळ्या शाळेत आम्ही डायरेक्टली एड्रेस करतले जेणे करून मूल्यवर्धनात पुराय गोंयभर काम कितें केलां हे सगळ्या पेरेंट्स आणि व्हर्च्युअली एड्रेस करतना गोंयांतल्या प्रत्येक प्रायमरी शाळेत तेजे भुरगे तांचे टीचर्स PTA आणि त्या गांवांतलो पंच सरपंच हांच्यांनी तो कार्यक्रम अटेंड करचो ज्या निमित्तान आमकां मूल्यवर्धनात आमी केदो मोठो बदल शिक्षणात हाडला हो सगळो तेंच्या पर्यंत पावतलो 18 तारखे दीस मॉर्निंग सेशनान म्हणजे आमी सकाळी 10 ते 12 पर्यंत हो कार्यक्रम आसतलो जेणे करून आमच्या एड्युकेशन सेक्टरांतले न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमी मॉडल म्हणून खंयसर इम्प्लिमेंट केला एड्युकेशन सेक्टरांत आमी बेस्ट प्रॅक्टिसीस खंयच्या स्कुलांत राबयता ह्यो सगळ्यो व्हर्च्युअली 1-2 ते 2.5 वरांच्या कार्यक्रमाक आनी एट अ टायम गोंयांतली सगळीं स्कुलां आनी प्रायमरी स्कुल्स हे ह्या व्हर्च्युअली ह्या कार्यक्रमांतल्यान जॉईन जातले त्या निमित्तान आमी एड्युकेशन सेक्टरांत आनी विशेष करून प्रायमरी सेक्टरांत न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना आनी मूल्यवर्धनात कशा पद्दतीत वेगवेगळ्यो स्टेप्स घेतल्या हे सगळे पेरेंट्स आणि टीचर्स ह्या सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून 18 सप्टेंबर ह्या दिसा व्हर्च्युअली 19 सप्टेंबर ह्या दिसा पर्सनली हांव एड्रेस करपाचो आसा इव्हॅल्युएशन करपा खातीर जेन्ना वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीक तांच्यांनी बरयलें वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी हॅज रेडी आणि तांच्यांनी तांकां लेटरूय धाडलें की वी आर रेडी टू डू द इव्हॅल्युएशन ऑफ युअर प्रोजेक्ट एंड दे आर स्टार्टिंग द इव्हॅल्युएशन with the government of Goa and Mutta foundations they haja fude म्हणजे along with the communication they are online communication with the teachers parents and the students हाज्या करून ते इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट्स हाज्या फुडें सबमीट करतले इव्हॅल्युएशन रिपोर्टा खातीर सुद्दां गोंय राज्य सिलेक्ट जावप ही मोठी अभिमानाची गजाल आसा inculcate constitutional values in children aligning with school curriculum and national policies for social emotional learning through a child centric joyful constructivist activity based pedagogy with cooperative learning and classroom structures प्रोग्रामचा जे कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क आहे ह्याचा जो एम आहे टू एनेबल स्कूल्स टू प्रोव्हाइड चाइल्ड फ्रेंडली व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन अँड एन्व्हायरमेंट टू नर्चर केअरिंग रिस्पॉन्सिबल अँड डेमोक्रॅटिक सिटीजन हा अतिशय महत्वाचा आहे संपूर्ण देशामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एक पूर्ण राज्यामध्ये सर्व शाळांच्या मध्ये अशा प्रकारचा यशस्वी कार्यक्रम राबवून त्याचा एव्हिडन्स आलेला आहे हा पहिलाच प्रयोग असेल असं मी ठामपणाने सांगू इच्छितो कारण याच्यामध्ये आम्ही अनेक वर्षापासून रिसर्च करतो आहोत प्रसाद पोची फॉर हेरल्ड टीव्ही Rotaract Club of Panjim, in collaboration with Studio 07, conducted a Ganesha clay idol moulding workshop at Mahalakshmi Temple on August 21st. Nearly 35 participants of different age groups from 12 to 32 participated in the workshop and used natural clay. A group of children performed a special Gumot Aarti. Rotaract Club of Panjim conducted a Ganesh clay idol moulding workshop at Mahalakshmi Temple. The workshop was organized in collaboration with Studio 7. Nearly 35 participants of different age groups from 12 to 32 participated in the workshop.
Sagun Gowdy for Herald TV. And now some sports news. Colorado registered a solitary goal victory over Reprovado and moved into the next round of the Varka Cup football tournament at Varka ground on Wednesday. Lanier Mendonça netted the match winner for Colorado and received the Man of the Match award at the hands of chief guest Shalin Pereira, ex-Sarpanch of Varka. Colorado registered a solitary goal victory over Reprovado and moved into the next round of the Varka Cup football tournament. The match was played at Varka ground on Wednesday. Lanyard Mendonça netted the match winner for Colorado. Mendonça was awarded the Man of the Match award. Inacio Arona for Herald TV. Sao Paulo Sports Club Arambol defeated Parce Sports Club 4-2 via the tie-breaker in the final of the late Manuel Rodrigues Soccer Cup 2022 organized by Sao Pedro Arambol at Mount Carmel Church Ground, Arambol on Wednesday. Sao Paulo Sports Club Arambol defeated Parce Sports Club 4-2 via the tiebreaker. Amit Ciprian missed the chances to score for Sao Paulo in the first half. In the tiebreaker, Sao Paulo Sports Club proved to be better shooters. Father Roman Rodriguez gave away prizes to the winners and runners-up. Inacio Arona for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.